Hello friends, in this video we'll be discussing the important questions and answers of IBO-02 International Marketing Management, and let's see what questions that you should prepare for this particular subject. Actually it's a marketing subject, as we know, and marketing basically it's a very vast subject, and it covers a lot of concepts. So you need to work a little bit harder in this subject. Fine. So let's see how can I help you in the preparation for the exam. Okay. So we will go unit wise, and unit wise the first question that you should learn about, like what is marketing. Simple one, not a big problem, because marketing is a it's a very wide concept, and which starts much before the production and even continues after the sale of goods. And when we talk about the importance of marketing for every organization, in fact marketing is one of the most complex function. So why it is important? Because it helps to identify the wants or needs of the customers. It helps to frame strategies of marketing. It helps to satisfy the consumers, and when customers are satisfied, that will increase the sales and revenue of the firm. And ultimately this is the fourth point, sales and revenue, and it also enhances the goodwill of the company. Okay, fine. The next concept is philosophies of marketing, like what are the different philosophies which are studied in marketing. So as far as business is concerned, these five marketing philosophies are more popular. Actually this production concept, I mean the philosophies of marketing are used in production, because through marketing we can know the taste and preference of the customers, and ultimately the production manager can plan out what type of goods and services it's going to produce. Then product concept, like through marketing we can know what type of products are generally demanded by the customers. So the company can plan out the designing of the product. Then we have selling concept. Selling in fact is a part of marketing, so both are very closely connected. And then we have marketing concept itself. So marketing philosophy is again that is used in the marketing of the goods and services of the company, and it has some societal concept too. I mean to take care of the society and not to pollute the environment, to supply good quality of goods and services. So like that. The difference between selling and marketing, it's easier one. We have discussed this in my previous videos also. My dear friends, I would also advise you to watch my previous videos on IBO-02. Okay, then we have marketing mix. When you are asked to define marketing mix, basically it is a tool, it is a device, it is a mechanism where the firm uses the different components or elements of marketing to achieve the objectives of the company. And these are the different components. There are four components of marketing mix, which are also known as 4 P's. The first one is product mix, second price mix, third place mix, fourth promotion mix. So this is how the marketing, the whole concept of marketing revolves around these four components. Okay guys, let's move on to the next question, a very important one for the exam. Why do firms go international? In Mcom, we have also encountered this question many times in other subjects too. So why a company will think of selling its goods and services in the international market? So this is the question, and there are as many as 8 reasons for this. The first one is the unfavorable domestic market. If the domestic market is not favoring the company, it can go for international marketing. The second one is government policies. If they are not if the government policies doesn't suit the company, then it can start
start thinking about international trade, growth of international market. If the demand in the international for the goods and services which the company deals in increases, so it can go for international business. Then if the company has increased its production capacity or the volume of production, then also it would definitely like to sell off that extra production in the foreign markets to reduce business risk. That like there are different types of business risk exist in the domestic country. So to face those risks, to encounter those risks, the company can go for international trade. Sometimes due to inflation also the company goes international. Sometimes the objective of the firm is such that it wants to do import and export trade, so then also it goes into that. And lastly, growth and expansion of the company. So due to that also the company wants to expand its wings and go international. Let's talk about unit 2. The question is, what are the different processes involved in international marketing? So as a international marketing manager, so when you will try to enter into international market, so these 5 steps you need to consider. First, you will select the market, where or in which country you want to sell your goods or services. Then you will select the product. If the company has multi products portfolio, then it will select those products which can be easily sold on the international platform. Then you will think about the mode of entry into that selected market. And fourthly, marketing strategy, like you will frame the international strategy, how you will start with, and international organization decision. So these 5 things you need to process, you need to think about when you enter into international market. The next question is EPRG framework or orientation, and this is a very common question. Many a times it comes in the exam. And this EPRG, there are 4 letters, and 4 letters it tells about the 4 different approaches. So E stands for ethnocentric approach, P for polycentric, R for regiocentric, and G for geocentric. So while entering into the foreign market, the company always analyze the EPRG framework, and it has to select any one of these approaches while doing international business. Okay, unit 3, it is on international marketing environment. We know about this, what is business environment and why it is important, its significance. Quite very important to analyze the environment before entering into foreign market. So these are all the benefits provided by analysis of the international market. You can identify the different opportunities and threats that exist in the international market. You can properly utilize the resources, the company's resources. You can easily adapt with the rapid changes that are going around, and the company can frame better policies and strategy of marketing. And these are the different types of environment. We have studied about this many times. So micro, macro. Okay. Okay friends, let's move on to unit 4, international market segmentation. And here you should know about what is this international market segmentation. As we know, segmentation means dividing the market into different parts, smaller parts. And it helps to have a systematic analysis of every part of the market, and the company can make strategy on the basis of those analysis. Now you should remember about the important objectives of market segmentation. These 3 objectives are important. So then we have some essential for effective market segmentation. That means it should be measurable, and the market should be accessible. It can be differentiable, it can be actionable. We can take action in the market. It should not be a the lazy market where the responses are not there, and substantial market.
and there are many advantages of market segmentation. So these are all, it's obvious. We can also write this with our own words, no problem with that, because it helps to, due to market segmentation, company can know the wants of the customers. Then it helps to frame strategies. It helps to find the strength and weakness of the competitors. Then comes resources. We can use the resources effectively, and that ultimately increases the production, sales and profit of the company. So like this. Okay, the most important part of this unit is this question: basis of international market segmentation. So basically we can, when we want to segregate, we want to divide the international market. So we can divide on the basis of these 5 types. The first one is the geographic segmentation, that is on the basis of geographical area. The second one is demographic segmentation, where the market is divided on the basis of some attributes or characteristics like age, sex, income, education, occupation of the customers. We have some psychographic segmentation, where the market is divided according to the attitude, values and personality of the customers. On the basis of behavior, we can divide the market into different parts, and on the basis of the benefits that the company wants to get from the market. So on that basis also the market can be segmented. Okay. The next question is market targeting. Okay, what is this market targeting? Basically, as the name implies, market targeting, we have to target a particular market. Okay, and for that we need to follow a systematic way or process. So these are all the process, these 4 different processes. Like we can go for concentrated marketing, where only one market is being concentrated. One is differentiated marketing, where the products are differentiated from the competitor's product. Undifferentiated marketing is just the opposite of differentiated marketing, and choosing a product so that we can that can be easily sold in the targeted market. So these are all the procedures that you are going to implement in market targeting. Then comes market positioning. So you are going to position the product in the market with the competitors, and we can make use of these 3 strategies, very popular one. These methods of product positioning. So one thing, the first strategy is comparative strategy, where we can compare our product with the competitor's product. The other one is differentiation strategy. We are offering our own product with some differences in the qualities and all that, so that can be differentiated with competitors. And segmentation, we will divide our product into different segments and sell in the market. Okay. The next one is different types of marketing positioning. As you can see here, there are 2 types: high tech positioning and high touch positioning. In high tech, the products are positioned on the basis of the features of the product, the technical details of the product. And in high touch positioning, the products are positioned on the basis of the product image, the photo, demo. So like this. So you can expand this. You can also learn this one, the relation between market segmentation, targeting and positioning. Okay, let's move on to unit 5, foreign market selection. How will you select the foreign market? So these are the 4 criteria that you are going to use. First, you will determine what is the market size of the international market. Then what is the political environment prevailing in that market. कुछ लीगल एनवायरनमेंट होते हैं, उन्हीं को भी कंसिडर करना होता है बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट. और कुछ सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री, जहाँ पे अपने को माल सेल करना है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. यूनिट 6 की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस. एंड यहाँ पे मोड्स ऑफ एंट्री के बारे में आपको ये क्वेश्चन करना है कि किस तरीके से फॉरेन मार्केट में हम लोग एंटर कर सकते हैं. मोड्स, वेज. तो ये 5 बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं. जैसे सबसे पहले तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस फ्रेम कर सकते हैं, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके भी हम लोग फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं.
एंड ये क्वेश्चन के आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों ही आपको लर्न करने हैं फॉर द एग्ज़ाम। एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे करना चाहिए डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है। ओके, यूनिट 7 की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्लानिंग करती है कंपनी, एंड इस यूनिट में इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो कोई भी प्रोडक्ट का एज वी नो उसकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। एंड ये 4 सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, देन स्लोली इट कैप्चर्स द मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ स्टेज, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट अटेन्स मैच्योरिटी, जहाँ पे मैच्योर्ड हो जाता है प्रोडक्ट, वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, अच्छी सेल होती है एंड धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Then we have this next question, processes or steps in developing a new product in the international market। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ये 6 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट अपने को मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद में अपनी आइडिया को स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद में उसकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है, फिर एनालाइज या टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, उसके बाद में उसको कमर्शियलाइजेशन किया जाता है, मार्केट में भेजा जाता है, एंड लास्टली इवैल्यूएशन, फीडबैक कलेक्ट करते हैं कस्टमर से कि हाउ इज़ द प्रोडक्ट। यूनिट 8 की बात करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस। यहाँ पे आपको करना चाहिए व्हाट इज़ ब्रांडिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। एज वी नो कि ब्रांडिंग बेसिकली ये गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग, जैसे रेमंड, कोलगेट, लिवाइस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर ब्रांड्स हैं एंड काफ़ी हेल्प करते हैं। एक बार अगर ब्रांड बन जाए तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द कंपनी टू सेल द प्रोडक्ट। एंड कुछ एक यहाँ पे ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आपको लर्न करना है, जैसे कि यहाँ पे 4 ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज कंपनी कैन यूज़। द फर्स्ट वन इज़ कंपनीज नेम ब्रांडिंग, उसके बाद में इंडिविजुअल ब्रांडिंग होती है, फॉर ओनली वन प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का नाम ही खुद ब्रांड हो जाता है, जिसको कंपनी ब्रांड बोलते हैं हम लोग। और एक होता है एटीट्यूड ब्रांडिंग, और एक होता है अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अम्ब्रेला ब्रांडिंग में अगर कंपनी के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसके अम्ब्रेला ब्रांड में पॉपुलर हो सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, तो लाइक दैट। एक डिफरेंस और कर सकते हैं बिटवीन ग्लोबल ब्रांड एंड लोकल ब्रांड। ओके, ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में कर सकते हैं, ये डिफरेंस भी कर सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग। इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी टाइम एक्सप्लेन किया है। पैकेजिंग आपको करना चाहिए, व्हाट इज़ पैकेजिंग, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पैकेजिंग डिसीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन जून में भी आया था। ओके, उसके बाद में है लेबलिंग, हाउ लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेबलिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है फॉर द एग्जाम। ओके, यूनिट 9 की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्राइसिंग, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्राइसिंग द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग जब हम लोग करते हैं तो ये 6 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉम्पिटिटर का प्राइस कैसा है, अकॉर्डिंगली वी सेट आवर प्राइसेस, एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैसी है, डिमांड ज़्यादा है तो हाई प्राइस सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म कैसे हैं, टू अर्न मोर और टू सेल मोर, तो अकॉर्डिंगली इट सेल्स प्राइस। इनकम ऑफ द कस्टमर कैसा है उस एरिया में, एंड गवर्नमेंट के रेगुलेशंस एंड रूल्स कैसे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ और स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग ए प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी में आप ये 7 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ प्राइस स्कीमिंग, जहाँ पे पहले हम लोग हाई प्राइस सेट करते हैं एंड वी टेक अवे ऑल द क्रीम्स। देन मार्केट पेनिट्रेशन में प्राइस को लो रखा जाता है एंड द कंपनी वांट्स टू कैप्चर द मार्केट। तो फिर धीरे धीरे कंपनी उसको एनहांस करती है, इंक्रीज़ करती है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकती है कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ करके उसकी प्राइस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, जैसे प्राइसिंग एट 99 और 199 और 999।
तो ये एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है कस्टमर्स के दिमाग में। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर सकते हैं, आई मीन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। डायनामिक प्राइसिंग हम लोग फिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो कर सकते हैं। ज्योग्राफिक प्राइसिंग कर सकते हैं, आई मीन डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, बिजनेस कंपटीशन, एक्सचेंज रेट्स। सो ऑल दिस अफेक्ट द इंटरनेशनल pricing. The next question is what is transfer pricing and the different methods of transfer pricing. ये question भी आपको करना चाहिए for the exam. Then we have the next question from IMC. What is international marketing communication and what are the different tools of international marketing communication? As we know कि company is always there interacting with the customers. So for that it needs to have a good communication tool. तो जैसे ये बहुत सारे tools हैं जो हम लोग communication में use करते हैं and ये कुछ steps हैं marketing communication में जो company लेती है, जैसे कि यहाँ पे identifying the target audience, objectives of the communication, determining the message, budget, channels of communication. तो like that ये सब factors को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जंप करती है। यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स ड्रॉबैक्स। तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम। एक डिफरेंस और कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड एडप्टेशन का। ये भी काफ़ी टाइम मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी टाइम आया है। And factors affecting standardization and adaptation, so you can also revise this. The next unit, personal selling. By selling, salesman जो sell करता है, that is personal selling, and why it is important to seller and why it is important to buyer. तो ये दोनों ही करने हैं। Steps involved in personal selling, ये क्वेश्चन भी काफ़ी important है, बहुत कॉमन भी है, हमेशा ही आता है एग्जाम में। जब सेल्समैन जब प्रोडक्ट सेल करता है, कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन शुरू होती है, तो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स वो लेता है। तो ये 8 स्टेप्स यू कैन हाईलाइट इन योर आंसर। ओके, पब्लिसिटी के बारे में आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी को पे करना होता है। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो लाइक दिस, advantages and disadvantages of publicity. So this question also needs your attention. Unit 15 is international marketing of services. तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस का डिफरेंस लिख सकते हैं, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में भी हम इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस इन द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। एज वी नो कि ये सर्विसेज आर इनसेपरेबल, जिसको इंटेंजिबल है तो ये इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ हेट्रोजीनियस, इट इज़ इंटेंजिबल, यू जस्ट कांट टेक द ओनरशिप, एंड दीज आर पेरिशेबल वंस यू यूज्ड, एंड प्रॉब्लम इन मेजरिंग सर्विसेज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। देन वी हैव बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स दैट एग्जिस्ट और टैरिफ्स दैट आर इम्पोज्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, and why these services enjoys an important place in the world trade. So ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, important क्वेश्चन भी है। and opportunities for India. इंडिया कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे उसके सर्विस सेक्टर्स काफ़ी एक्सपैंड है, तो ये भी कर सकते हैं। गट्स के ऊपर आपको करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है ये गट्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस। सो देन वी हैव सम इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। कुछ एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो एमएनसी टीएनसी अडॉप्ट करती है, उसके बारे में ये चैप्टर है, तो इसको भी आपको रिवाइज करना चाहिए। मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग का डिफरेंस, ये भी एग्जाम्स के लिए आपको बिल्कुल तैयार होके जाना है। and impact of development in information and technology in marketing, how technology has helped to develop international marketing.
तो ये 5 पॉइंट्स आप लग सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स इंप्रूव हुए हैं, ट्रांजैक्शन चैनल्स इंप्रूव हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीज हुए हैं, सो दैट ऑल रिजल्टेड इन इंक्रीज सेल, रिड्यूस्ड कॉस्ट, सो लाइक दैट। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च पे आपको करना चाहिए, व्हाट इज़ दिस मार्केटिंग रिसर्च एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। So these questions need your attention. One difference you can write between MIS and MR, that is Marketing Research and International Marketing Information System. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है, सो बी वेरी पर्टिकुलर। देन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, एज वी नो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आई मीन MCO-03 में, MCO-22 में, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। The different methods of collecting datas, okay. Sampling के बारे में पढ़ सकते हैं, methods of sampling, then difference between random and non-random sampling. तो ये कुछ methods हैं random sampling के, as you can see on the screen. तो इनके बारे में आपको briefly learn करना है, okay. The next, in fact ये रिपोर्टिंग के बारे में आपको करना चाहिए कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, जैसे कि इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी इकोनॉमिकल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन द टाइम एंड इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, एंड these are the guidelines for a good international marketing report। 10 पॉइंट्स हैं, ये आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे IBO-02 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स के लिए 100% तैयार करना चाहिए, एंड आई होप लाइक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।